या तो लिटरल ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जो कहलाती है, या फिर मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन जिसे आप इडियोमेटिक ट्रांसलेशन भी कहते हैं। Have a look at the instructions. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative idiomatic expression. Figurative idiomatic expression का मतलब यह है कि बामुहावरा तर्जुमा। हमेशा हम लोग लिटरल ट्रांसलेशन बहुत सारी जगहों पे नहीं कर पाते, हमें वहां पे बामुहावरा या इडियोमेटिक ट्रांसलेशन ही चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ये उर्दू का जुमला आ जाता है कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, तो मैं इसको इस तरह ट्रांसलेट नहीं कर सकता, माई हार्ट बिकम्स गार्डन गार्डन। मैंने ऐसे ही ट्रांसलेट करना है, आई वॉज ओवरजॉयड, माई हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इडियोमेटिक और फिगरेटिव ट्रांसलेशन। आपकी ट्रांसलेशन में कभी कभार सिर्फ और सिर्फ वर्ड फॉर वर्ड यानी कि लिटरल ट्रांसलेशन की गुंजाइश होती है। कभी कभार एग्जामिनर कुछ ऐसे अल्फाज या कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर देता है जहां पे आप मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन उसकी ज्यादा इजीली कर सकते हैं, एंड दिस इज वन सच सिचुएशन। डियर स्टूडेंट, दिस ट्रांसलेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ 2016 एग्जामिनेशन, जिस वक्त आपका कोर्स चेंज हुआ था और फर्स्ट टाइम जो है आपको उर्दू इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका सवाल दिया गया था। पीएमएस के एग्जाम में 2009 से यह सवाल हमेशा से मौजूद है, मगर सीएसएस के एग्जाम में पहली बार ये 2016 में इंट्रोड्यूस कराया गया। ये 5 सिंपल सेंटेंसेस हैं और इसके अंदर थोड़ी बहुत स्किल्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है। पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूं। आम लोगों का ख्याल है कि मुल्क के कानून और फर्द की आजादी एक दूसरे की जिद होते हैं। बज़ाहिर ये बात गलत मालूम नहीं होती। हर कानून शहरियों पर कोई ना कोई पाबंदी आयद करता है। अगर मुल्क में कवानीन की तादाद ज्यादा हो तो मजमूई पाबंदियां भी ज्यादा होती हैं। ज्यादा पाबंदियों से फर्द की आजादी इनके बोझ तले दबकर रह जाती है। इसके बरक्स कवानीन की तादाद कम हो तो शहरियों की आजादी का दायरा वसी होता है। सो इट्स अ सिंपल ट्रांसलेशन। इसके अंदर टेस्ट केस सिर्फ 2 ही हैं, ये जो 2 इसने कंडीशनल सेंटेंसेस यूज कर दिए हैं टाइप 1। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आम लोगों का ख्याल है कि मुल्क के कानून और फर्द की आजादी एक दूसरे की जिद होते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने यहां पे 2 पॉसिबल वर्जन लिखूंगा। आप जिस वर्जन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं आपने वो फॉलो करना है। कुछ लोग लिटरल ट्रांसलेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कुछ लोग मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन यानी कि ओवरऑल आइडिया बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आम लोगों का ख्याल है, आम लोग, यस, आम लोगों का ख्याल है। हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट? कॉमन पीपल थिंक दैट, बिल्कुल सही है जी। कॉमन पीपल थिंक दैट। अकॉर्डिंग टू कॉमन मैन या कॉमन अप्रोच भी आप कह सकते हैं। मुल्क के कानून, मुल्क का कानून, लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द कंट्री। और फर्द की आजादी, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, एक दूसरे की जिद होते हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, उलट होते हैं। आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। Now dear students, listen again. What we are doing a literal translation, word for word translation. Common people think that law of the country and freedom of the individual are contrary या are opposite to each other. ये आपकी literal translation है और ये बिल्कुल accurate है and it's 100% acceptable. However, we can also go for a metaphorical translation which starts in this way. आम लोगों का ख्याल है, it is a general perception. It is a general perception. It is a common perception
सेंटेंस आपका डमी सब्जेक्ट से भी शुरू हो सकता है. इट इज अ जनरल परसेप्शन दैट देयर इज अ क्लैश. It is a general perception that there is a clash between मुल्क के कानून. जब कानून की बात आती है तो फिर कंट्री नहीं कहते, हम स्टेट कहते हैं. या जो दूसरी स्पेसिफिक टर्म है, अगर आप में से किसी ने इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में ये पढ़ा है, लॉ ऑफ द लैंड या लॉ ऑफ स्टेट, इन दोनों में से कोई भी वर्जन है एक्सेप्टेबल है. So it is a general perception that there is a clash between law of the land and freedom of the freedom of what? किसकी आजादी? फर्द की आजादी. मुझे यह बताएं, जिस शख्स पे कानून का इत्तलाक होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्द कहते हैं या शहरी कहते हैं? जिस शख्स पे कानून का इत्तलाक होता है, यस शादाबा, सिटीजन. Citizen is the correct word. So it's a general perception that there is a clash between law of the land and freedom of the citizen. And freedom of the citizen. Full stop. Dear student, एक वर्जन आपके सामने मैंने रखा था लिटरल, वर्ड फॉर वर्ड, और दूसरा रख रहा हूं मैं मेटाफोरिकल. सूट योरसेल्फ कि आप किसमें ज्यादा बेहतर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. It's a general perception that there is a clash between between law of the land and freedom of the citizen. बज़ाहिर ये बात गलत मालूम नहीं होती. जी मुनीर, you have a question? जी सलाम सर. सर मैंने पूछना था, अगर आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हो और कोई ऐसा उर्दू का वर्ड आता है जिसका आपको मीनिंग नहीं आता, तो उसकी जगह आप बस कुछ इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो जो उसकी सेंस, मतलब कोई जो पहले पिछला आपका कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उसकी सेंस बना दे, कि आपको एग्जैक्ट करना पड़ता है? ठीक है. यही मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन है कि आपने जो सेंस है, जो आइडिया है, वो कन्वे करना है. सो मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन कभी कभार आपके बहुत काम आ जाती है, स्पेशली इन दो सर्कमस्टांसेस जहां पे इस वर्ड को शायद आप उसकी स्पेसिफिक वोकैबुलरी ढूंढ ना पा रहे हो, तो आप ओवरऑल आइडिया कन्वे करना है. ठीक है, थैंक यू सर. यू वेलकम बेटा. बज़ाहिर ये बात गलत मालूम नहीं होती. जी, एनीवन हु वुड लाइक टू ट्रांसलेट इट. बज़ाहिर ये बात गलत मालूम नहीं होती. ठीक है जी. यस शहजाद, अपेरेंटली दिस डज नॉट सीम रॉन्ग. बिल्कुल सही है. अपेरेंटली ना भी लगाएं, सीम्स लगा दिया तो ये भी काफी है. दिस डज नॉट सीम रॉन्ग. इट सीम्स नॉट रॉन्ग अगर किसी ने यूज किया तो वो भी ठीक है. इट सीम्स नॉट रॉन्ग. टू बी काशिफ ना लगाइए, क्योंकि सीम्स ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ गया, टू बी की जरूरत नहीं है. सो दिस डज नॉट सीम टू बी प्रॉब्लमैटिक, ये भी ठीक है जी. सो सिंपल एक्सेप्टेबल है. डज नॉट सीम रॉन्ग, बिल्कुल सही है जी. हर कानून शहरियों पर कोई ना कोई पाबंदी आयद करता है. हर कानून. हाउ वुड यू ट्रांसलेट? एवरी लॉ. सिंपल एंड टू द पॉइंट. एवरी लॉ शहरियों पर कोई ना कोई पाबंदी आयद करता है. पाबंदी आयद करता है. इम्पोजेस. एवरी लॉ इम्पोजेस कोई ना कोई पाबंदी. Yes, certain restrictions. Every law imposes certain restrictions on the citizen. Every law imposes certain restrictions on the citizens. बिल्कुल ठीक है जी. Now, dear student, be careful. This comes the conditional sentence type 1. अगर मुल्क में कवानीन की तादाद ज्यादा हो तो मजमूई पाबंदियां भी ज्यादा होती हैं. अगर मुल्क में कवानीन की तादाद ज्यादा हो तो, if there are more laws,
याद रखे बेटा, आपको ये पैराग्राफ दिया गया है। इन अ पैराग्राफ यू डू नॉट रिपीट द नाउन अगेन एंड अगेन। सब्जेक्ट क्लियर है, एक तरफ मुल्क है और दूसरी तरफ आपके वो अफराद है जिन पे आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। इफ देर आर मोर लॉज इन द कंट्री, सिर्फ इतना ही कहना काफी है। इफ देर आर मोर लॉज इन द कंट्री लगाया तो कोई मुजायका नहीं है। इफ देर आर मोर लॉज तो नतीजा क्या है, तो मजमूई पाबंदियां भी ज्यादा होती हैं। इफ देर आर मोर लॉज देन देर विल बी शाबाश, वेल डन काशिफ, then there will be more restrictions. If there are more laws, there will be more restrictions. Well done. ये होता है डियर स्टूडेंट पैरेलल स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर आपने इफ के साथ यूज किया वही जो है देयर वाला आपने रिजल्ट क्लॉज के साथ भी यूज कर दिया। ज्यादा पाबंदियों से फर्द की आजादी इनके बोझ तले दबकर रह जाती है। ज्यादा पाबंदियों से, इसका मतलब है ज्यादा पाबंदियों की वजह से। ड्यू टू मोर रिस्ट्रिक्शंस, वेल डन, बिल्कुल सही किया जी। ड्यू टू मोर रिस्ट्रिक्शंस फर्द की आजादी इनके बोझ तले दबके रह जाती है। फ्रीडम ऑफ द सिटीजन is suppressed. Freedom of the citizen is suppressed. दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ड्यू टू मोर रिस्ट्रिक्शंस, कॉमा, फ्रीडम ऑफ द सिटीजन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। शहजाद ठीक है, मोर रिस्ट्रिक्शंस लीड्स टू वायलेशन ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल ठीक है जी, एक्सटेंसिव रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं ज्यादा पाबंदियों से। मैं सिंपली इसका लेके जा रहा हूं, ड्यू टू मोर रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ सिटीजन इज सप्रेस्ड और कॉम्प्रोमाइज। जितना बेटा सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल इसको रखिए। इसके बरक्स कवानीन की तादाद कम हो तो शहरियों की आजादी का दायरा वसी होता है। इसके बरक्स ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, बोथ आर करेक्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे इसने एक ट्रिक की है। इसने यहां पे अगर का वर्ड यूज नहीं किया। अगर का वर्ड यूज नहीं किया, आप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, इफ देयर आर फ्यूअर लॉज, यानी कि पहले से कंपेयर कर रहा हूं, मौजूदा सूरत हाल से कंपेयर कर रहा हूं। इफ देयर आर फ्यूअर लॉज, याद रखें कभी भी लेस लॉज डियर स्टूडेंट आपने यूज नहीं करने। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लेस इस्तेमाल होता है। काउंटेबल यानी जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म हो, उनके साथ हम फ्यूअर यूज करते हैं या फ्यू यूज करते हैं। सो ऑन द अदर हैंड, इफ देयर आर फ्यूअर लॉज, ठीक है जी काशिफ, ऑन द अदर हैंड इफ रिस्ट्रिक्शंस आर लेस देन सिटीजन फ्रीडम इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है जी। On the other hand, if there are fewer laws, then there will be more freedom. There will be more freedom. यहां पे आजादी का दायरा, सर्कल ऑफ फ्रीडम विल इंक्रीज, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट, उसकी जो सेंस है उस पर गौर करें। इंग्लिश सेंस आप वो लेके जाए जो इंग्लिश स्ट्रक्चर का जो है एक मेथड है, हमने उसे प्रैक्टिस करना है। सो हर उर्दू का स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज लैंग्वेज पे ट्रांसलेट नहीं हो सकता। तो शहरियों की आजादी का दायरा वसी होगा, तो लिटरल ट्रांसलेशन यही हो सकती है, द स्कोप ऑफ सिटीजंस फ्रीडम विल इंक्रीज। एक्सेप्टेबल है, मगर हमने सिंपल इसको फॉर्म में किया। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर आर फ्यूअर लॉज देन देयर विल बी मोर फ्रीडम। फ्यूअर कंपैरिजन के लिए होता है अगर तादाद कम हो, मोर भी कंपैरिजन के लिए होता है अगर तादाद ज्यादा हो। सो अगर लॉस की तादाद कम है पहले की निस्बत, तो आजादी भी ज्यादा बढ़ जाएगी पहले की निस्बत। तो दैट इज अ सिंपल
ट्रांसलेशन 2016 में कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं थी ट्रांसलेशन की, फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में दिया जा रहा था और इसके अंदर इस पेपर में ओवरऑल वैसे भी स्कोर कम ही था क्योंकि चेंज ऑफ कोर्स हुआ है और उसके बाद जो है टेक्निक्स भी इन्होंने चेंज कर ली थोड़ी बहुत। सो दैट वाज वन वे। हाउएवर आने वाले पेपर्स में अगर आप देखें तो ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। I will move on towards the paper of 2018. And in the paper of 2018, he has paid more attention on the use of the conjunctions. पेपर नंबर 1 में अगर आप गौर करें तो प्रेजेंट टेंस का ही ज्यादातर जिक्र था। However, in paper of 2018, you will find not only the present tense but also the past tense and even one sentence that is relevant to present perfect. पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं। जी बेटा, अगर 2 पैराग्राफ हो तो ट्रांसलेशन भी 2 अलग पैराग्राफ्स में ही होगी। आमतौर पे होता है ऐसा नहीं, पीएमएस में हो चुका है। लाहौर शहर सियासत ही नहीं सकाफत का भी कदीम मरकज है। मुगलों की सकाफत ने अरूज का जमाना इस शहर में देखा। सिख सकाफत का भी यही मरकज था। इल्म और अदब की सकाफत भी इसी शहर के हिस्से में आई। अहले तसव्वुफ का भी यही मरकज था। तसव्वुफ की मशहूर किताब कश्फुल माजूब के मुसन्निफ हजरत अली हिजवेरी अल मशहूर हजरत दाता गंज बख्श भी इसी शहर में मदफून हैं। अंग्रेजों के दौर में भी लाहौर का फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज होता था। कयाम पाकिस्तान के बाद भी इस शहर की अहमियत कम नहीं हुई। सिंपल सेंटेंसेस है, सिर्फ एक ही इसके अंदर जो है टेस्ट केस है आपका, जो ये है तसव्वुफ की मशहूर किताब है, एक ही लॉन्ग सेंटेंस है, बाकी सारे सेंटेंसेस सिंपल है और शॉर्ट ही है। हाउएवर देयर इज a little technical dealing with this translation. Dear student, have a look at first sentence. लाहौर शहर सियासत ही नहीं सकाफत का भी कदीम मरकज है। लाहौर शहर, the city of Lahore, the city of Lahore. अच्छा जी शादाब, आपने बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किया है, मगर इसमें एक थोड़ा सा ग्लिच आ गया ग्रामर का। याद रखें नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनका स्ट्रक्चर हमेशा सिमिलर होना चाहिए। कहने का मकसद यह है नॉट ओनली के बाद अगर आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तो बट ऑल्सो के बाद भी एक ही लफ्ज इस्तेमाल करें। अगर आपने नॉट ओनली के बाद फ्रेज इस्तेमाल किया तो बट ऑल्सो के बाद भी फ्रेज ही इस्तेमाल करें। सो मैं आप ही के सेंटेंस को रिकंस्ट्रक्ट करता हूं। द सिटी ऑफ लाहौर is the Qadim Markaz, ancient center of not only politics but also culture. The city of Lahore is the ancient center of not only politics but also कल्चर। यहां पे देखिए नॉट ओनली के बाद एक वर्ड है, बट ऑल्सो के बाद भी एक ही वर्ड है। ये पैरेलल स्ट्रक्चर बेटा आपने ये जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस है उनके साथ इस्तेमाल करना है। यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर्स में आते हैं, आइदर और, नाइदर और। ही इज आइदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। नाइदर के बाद भी एक ही वर्ड है, नॉर के बाद भी एक ही वर्ड है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली के बाद भी एक ही वर्ड है, बट ऑल्सो के बाद भी एक ही वर्ड है। सो सिमिलर कंस्ट्रक्शन जो है हमेशा आपने वो यूज करनी है, ऑलवेज रिमेंबर। सो यहां पे सिमिलर कंस्ट्रक्शन इस तरह भी हो सकती है कि द सिटी ऑफ लाहौर इज नॉट ओनली द एंशिएंट सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बट ऑल्सो द एंशिएंट सेंटर ऑफ कल्चर। 2 बार फिर आपको एंशिएंट सेंटर रिपीट करना पड़ेगा। सो मैंने जो है एंशिएंट सेंटर नॉट ओनली से पहले यूज किया है ताकि नॉट ओनली के बाद सिर्फ पॉलिटिक्स और बट ऑल्सो के बाद सिर्फ
कल्चर रिपीट करूं। दैट इज द मेन आइडिया, बस इस चीज का ख्याल रखना है। मुगलों की सकाफत ने अरूज का जमाना इस शहर में देखा। मुगलों की सकाफत, द मुगल सिविलाइजेशन। जी प्लीज मेक एन अटेम्प्ट, इसको बेटा जरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। मुगलों की सकाफत ने अरूज का जमाना इस शहर में देखा। क्या अब मुगलों की सकाफत है? नहीं है, इस शहर में देखा, यानी कि देखा था। पास्ट टेंस अब हम यूज करेंगे। सो व्हाट वुड बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? मेक एन अटेम्प्ट। मुगलों की सकाफत ने, द मुगल सिविलाइजेशन ने अरूज का जमाना इस शहर में देखा। द मुगल सिविलाइजेशन जी वेरी क्लोज शादाबाद। द मुगल सिविलाइजेशन, the civilization Mughals at peak in city, was at peak in this city. इस तरह कर दे जी अमीना, that was the word I was looking for. The Mughal civilization witnessed या saw its peak in this city. The Mughal civilization witnessed या saw its peak in this city. The Mughal civilization witnessed या saw its peak in this city. Simple as that. अब अगर आप आने वाले सेंटेंसेस में देखें तो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ द उर्दू वर्ड भी, ऑल्सो ऑल्सो ऑल्सो। अब इसको जो है हमने रिडंडेंसी अवॉइड करनी है। सिख सकाफत का भी यही मरकज था। जी प्लीज मेक एन अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट इट। सिख सकाफत का भी यही मरकज था। काशिफ सिख कल्चर कह दें, ठीक है, सिखिज्म ना के वो के एक्सेप्टेबल है, सिख सिविलाइजेशन या सिख कल्चर कह दें, बिल्कुल सही है जी। इट वॉज दी सेंटर, हम पहले यूज कर चुके हैं, यहां पे हब यूज कर देते हैं। इट वॉज द हब ऑफ सिख कल्चर एज वेल। ऑल्सो नहीं यूज कर रहा मैं, एज वेल यूज कर रहा हूं, रिडंडेंसी अवॉइड कर रहा हूं। इट वॉज द हब ऑफ, इट वॉज द सेंटर ऑफ, इट वॉज द होम ऑफ सिख कल्चर एज वेल। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस वन डिमांड्स स्पेशल अटेंशन। इल्म और अदब की सकाफत भी इसी शहर के हिस्से में आई। शहर के हिस्से में, डियर स्टूडेंट ये देखें, जो आपको ट्रांसफर होती है, जो चीज आपको विरासत में मिलती है, उसे आप क्या कहते हैं? हेरिटेज, इनहेरिटेंस। यस, नाउ यू आर क्लोज। द सिटी also inherited the culture of arts and letters. अब यहां पे also मैंने दोबारा रिपीट किया, डियर स्टूडेंट इसको आपने रिप्लेस करना है। Moreover, the city inherited the culture of arts and letters. अगर आपने आर्ट्स एंड लिटरेचर लिखा है वो भी एक्सेप्टेबल है। लेटर का मतलब सिर्फ खत नहीं होता, इसका असल मतलब लिटरेचर ही होता है। The city also inherited the culture of arts and letters. ऐसे भी कर सकते हैं, the culture of arts and letters was inherited by this city. पैसिव करे एक्टिव करे, मीनिंग दोनों का सेम ही है। The culture of arts and letters was inherited by this city. अहले तसव्वुफ का भी यही मरकज था। बेटा इल्म अदब की बात की है, इल्म अदब। सो इल्म अदब के लिए एक
इडियम है इंग्लिश लैंग्वेज में, आर्ट्स एंड लेटर्स। अच्छा, देखा जाए तो शदाबा ये पैसिव में ही है, सेंटेंस आपका है ही पैसिव में, ठीक है। सो पैसिव वॉइस ही इसका असल आंसर है। मैंने पहले इसको सिंपली एक्टिव वॉइस में लिखा है, बाद में पैसिव वॉइस में मिला है। इल्म और अदब की सकाफत, द कल्चर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स वॉज ऑल्सो इनहेरिटेड बाय दिस सिटी, भी इसी शहर के हिस्से में आई। तो आपने एक्चुअली पैसिव में ही कन्वर्ट करना है। अहले तसव्वुफ का भी यही मरकज था, अहले तसव्वुफ। अच्छा जी, अहल होता है इंसानों को कहते हैं, उन अफराद को कहते हैं, जैसे अहले बैत वो जो 5 है अफराद। अहले तसव्वुफ वो अफराद जिनका तसव्वुफ से ताल्लुक है, उन्हें क्या कहते हैं? जी है, यू आर वेरी क्लोज। उन अफराद को क्या कहा जाता है जो तसव्वुफ जो है प्रैक्टिस करते हैं? सूफीज, दैट इज द आंसर। सेंट्स भी एक्सेप्टेबल है, सूफीज में इसलिए कहूंगा क्योंकि आपकी इंग्लिश डिक्शनरी में ये वर्ड मौजूद है, जैसे जिहाद मौजूद है। सो सूफीज आप इसको लिखें, अगर सेंट्स भी लिखते हैं एक्सेप्टेबल है वो भी। सो अहले तसव्वुफ का भी यही मरकज था। कौन मरकज था? लाहौर। लाहौर के लिए हमने प्रोनाउन यूज करना है इट। इट वॉज होम टू सूफीज। फर्दरमोर इट वॉज होम टू सूफीज। इसने भी इस्तेमाल किया, ऑल्सो मैं अवॉइड कर रहा हूं। फर्दरमोर इट वॉज होम टू सूफीज। Now student, have a look at this sentence. तसव्वुफ की मशहूर किताब कश्फुल माजूब के मुसन्निफ हजरत अली हिजवेरी अल मशहूर हजरत दाता गंज बख्श भी इसी शहर में मदफून है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा अपना सीधा करें, जिससे हमने अपने लेक्चर स्टार्ट किए थे। मुझे बताएं कौन दफन है? हजरत अली हिजवेरी। सब्जेक्ट अपना क्लैरिफाई करें। सो तसव्वुफ की मशहूर किताब कश्फुल माजूब के मुसन्निफ हजरत अली हिजवेरी रिनाउंड एज दाता गंज बख्श भी इसी शहर में मदफून है। तो मैं सब्जेक्ट से जो है अपना सेंटेंस स्टार्ट करूंगा। हजरत अली हिजवेरी अल मशहूर हजरत दाता गंज बख्श रिनाउंड एज हजरत दाता गंज बख्श राइटर ऑफ की मशहूर किताब फेमस स्पिरिचुअल बुक कश्फुल माजूब is also buried here. Now dear student, pay attention on the use of these bracketing commas. ये वो इंफॉर्मेशन है जो ब्रैकेट के अंदर भी लिखी जा सकती थी। यहां पे डबल एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डबल एडिशनल इंफॉर्मेशन। हजरत अली हिजवेरी renowned as हजरत दाता गंज बख्श राइटर ऑफ फेमस स्पिरिचुअल बुक कश्फुल माजूब इज ऑल्सो buried here. यहां पे इस कॉमे की जगह पे ये जो बख्श के बाद कॉमा है, अगर आप एंड भी लगा दें तो वो भी ठीक है और बात मुकम्मल भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सो हजरत अली हिजवेरी renowned as हजरत दाता गंज बख्श एंड राइटर ऑफ फेमस स्पिरिचुअल बुक कश्फुल माजूब इज ऑल्सो buried here. वो यहां पे मदफून है। रेस्ट्स हियर ये भी यूज कर सकते हैं। That was the only sentence that demanded your attention. ये थोड़ा सा टेक्निकल था हैंडल करने वाला। अगर किसी ने इसे इस तरह लिखा है, राइटर ऑफ फेमस स्पिरिचुअल बुक कश्फुल माजूब कॉमा हजरत अली हिजवेरी कॉमा रिनाउंड एज दाता गंज बख्श इज आल्सो buried here, वो भी एक्सेप्टेबल है। आपने वर्ड फॉर वर्ड लिटरल ट्रांसलेशन की है, मीनिंग उससे भी क्लियर है, मगर हमारा मकसद क्या है? वी हैव टू
follow the English structure. English structure, it always starts with the subject. Subject, verb, complement. Subject, verb, object. तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट पहले आइडेंटिफाई किया. नाउन जो है उसको सबसे पहले मैंने लिखा है द प्रॉपर नाउन. अंग्रेजों के दौर में भी लाहौर का फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज होता था. अंग्रेजों के दौर में भी लाहौर का फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज होता था. अंग्रेजों के दौर में. ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर, बिल्कुल सही है जी. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये भी सही है. इन द ब्रिटिश रूल, ये भी ठीक है जी. अच्छा, मजीद अगर आप देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये लोग ब्रिटिश राज भी प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश के बुक्स में. ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, तो रूल और राज दोनों जो है यहां पे एक्सेप्टेबल है क्योंकि डिक्शनरी में दोनों मौजूद है. ड्यूरिंग द era of British Empire, the fashion of Lahore was followed all over India. फॉलोड के साथ शदाबा इन ना लिखें. सेंटेंस बिल्कुल आपका एक्यूरेट है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, the fashion of Lahore was followed all over India. The fashion of Lahore was followed. याद रखें, फैशन नाफिज नहीं होता, फॉलो होता है, फ्री फॉलोइंग. The fashion of Lahore was followed all over India. Last sentence. कयाम पाकिस्तान के बाद भी इस शहर की अहमियत कम नहीं हुई. कयाम पाकिस्तान के बाद भी इस शहर की अहमियत कम नहीं हुई. Now dear student, that is the situation where we have to use the present perfect tense. कयाम पाकिस्तान, even after the independence of Pakistan, even after the inception of Pakistan, even after the independence of Pakistan, इस शहर की अहमियत कम नहीं हुई है. You are joining the past with the present. बेटा हैज का इस्तेमाल करें. Why has? Because whenever you join the past with the present, you have to use the present perfect tense. Even after the independence of Pakistan, the city has not lost its importance. The city has not lost its importance. अच्छा, अगेन शदाबा इज नॉट रिड्यूस ना करें, हैज नॉट रिड्यूस्ड. टाइम फैक्टर जब भी आ जाए, पास्ट को आप प्रेजेंट से ज्वाइन करें तो हमेशा आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे. जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, हैव यू एवर बीन टू क्वेटा? भाई माजी से लेकर अब तक, मेरे इस बोलने के लम्हे तक आप कभी क्या क्वेटा गई हैं? आप कहेंगे जी यस आई हैव बीन देयर, या नो आई हैव नेवर बीन देयर. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट को प्रेजेंट से ज्वाइन करता है. That is the main purpose. So dear student, in this text, more or less text तो सिंपल थी, मगर इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका इस्तेमाल था. मोर ओवर इसके साथ जो दूसरा टेस्ट केस था, दैट वाज द लॉन्गर सेंटेंस. तसव्वुफ की मशहूर किताब कश्फुल माजूब के मुसन्निफ हजरत अली हिजवरी अल मशहूर हजरत दादा गंज बख्श भी इसी शहर में मदफून है. Which brings me to the topic of correlative conjunctions and their relevant errors. तो यहां पे ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने डिस्कस किया है, ये कितनी किस्म के होते हैं और इनके रेलेवेंट एरर्स कौन से होते हैं. लेट अस गो फॉर देयर सोल्यूशन फर्स्ट. सो कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं.
and we always follow the same structure what we have followed with one correlative conjunction. Now, dear student, share screen. Have a look at your screen. The correlative conjunctions that we have recently discussed in this translation have been asked many times in the correction of errors question. Question number 1. The new models are not only less expensive but more efficient also. Now, dear student, tell me, where is the problem? Where is the mistake? But also more efficient. शहजादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. But also more efficient. But के साथ होना चाहिए ये also. तो ये also जो है misplaced जो है बहुत ज्यादा हो गया. So bring it closer to but also. Have a look at the second sentence. No sooner dash we left the shop than it began to rain. No sooner or than, ये correlative conjunctions है आपके. Anyone who would like to correct this mistake? Yes. No sooner had we. जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन शुरू में यूज हो जाए उसके फौरी बाद रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. नो सूनर हैड वी लेफ्ट, नो सूनर डिड वी लीव, डिड भी इस्तेमाल होता है. तो बहरहाल बेसिक हैड है. नो सूनर हैड वी लेफ्ट द शॉप देन इट बिगेन टू रेन. अभी हमने जो है दुकान छोड़ी ना थी के साथ ही बारिश भी शुरू हो गई. Have a look at this sentence, dear students, that is 2011. Not only he was a thief, but he was also a murderer. जो कंस्ट्रक्शन नॉट ओनली के बाद यूज हुई है वही बट ऑल्सो के बाद. मगर प्रॉब्लम क्या है? नॉट ओनली पहले यूज हो गया. जब कोरिलेटिव कंजंक्शन पहले यूज हो जाए तो इसके फौरी बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है. यस, Amina, your answer, and Shazad, your answer is correct. Not only was he a thief, that was the answer. या तो आप इसे इस तरह लिखें, he was not only a thief but also a murderer. या तो आप इस तरह लिखें, मगर ये एरर उसने आपको फिक्स करने को नहीं दिया. The error he was looking for कि अगर आप correlative conjunction से शुरू करते हैं जुमला तो क्या उसके फौरी बाद आप helping verb यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे. That is the main question. Have a look at the next sentence. It was both a long movie and boring. It was both a long movie and boring. ओके डियर स्टूडेंट, यहां पे जो है बोथ और एंड ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है. जैसे मैंने शुरू में आपको मिसाल दी थी, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. बोथ और एंड हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं. यस शदावा, योर आंसर इज करेक्ट. इट वाज बोथ लॉन्ग एंड बोरिंग मूवी. देखिए, लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव एंड बोरिंग इज आल्सो एन एडजेक्टिव. सो जो वर्ड आपने बोथ के बाद यूज किया है, जो स्ट्रक्चर, वही एंड के बाद भी यूज करेंगे. इट वॉज बोथ अ लॉन्ग एंड बोरिंग मूवी. इट वॉज बोथ लॉन्ग एंड बोरिंग मूवी. नेक्स्ट सेंटेंस. आई एम नॉट श्योर whether the white paint or painting it green would be better. ग्रीन पेंट, सिंपल इज दैट. देखिए यहां पे नाउन फ्रेज है द व्हाइट पेंट, तो यहां पे आप वर्ब फ्रेज क्यों यूज कर रहे हैं? आई एम नॉट श्योर वेदर द व्हाइट पेंट और द ग्रीन पेंट वुड बी बेटर. दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट.
either your friend will pick you up, either your father will pick you up or a friend. Yes, Amina, I go for your version. बिल्कुल ठीक है. Either your friend, either your father or a friend will pick you up. Will pick you up. That is the correct answer. Shabash. Have a look at the previous correction of errors as well. These are the errors of, obviously, conjunctions. I shall not come here unless you will call me. 2009. What is the problem here? Dear student, the problem is with will. Will नहीं होना चाहिए. ये सिंपल कंडीशनल सेंटेंस है. अनलेस यू कॉल मी आई शैल नॉट कम हियर. जब तक बुलाओगे नहीं तब तक मैं यहां पे नहीं आऊंगा. अनलेस में याद रखें नॉट ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है. अनलेस में नॉट पहले से मौजूद होता है तो यहां पे ये विल लगाना एक सेंटेंस में दो बार विल और शेल इस्तेमाल नहीं हो सकते. सो आई शैल नॉट कम हियर अनलेस यू कॉल मी. इस ऑर्डर को आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं. अनलेस यू कॉल मी कॉमा आई शैल नॉट कम हियर. नेक्स्ट 2018. I was rather impressed by the manner of the orator than by his matter. Rather than, rather एक तरफ है और then एक तरफ. Yes, Amina, your one is correct. शहजाद आपने भी बिल्कुल ठीक किया है. इसमें impressed को जो है आप पहले जो है मूव कर दें. वजह कि rather के बाद जो कंस्ट्रक्शन यूज हुई है by the manner वही कंस्ट्रक्शन then के बाद इस्तेमाल हुई है by his matter. So impressed को आप पहले ले आए. I was impressed rather by the manner. अब rather के बाद देखिए एक फ्रेज है then by his matter और then के बाद भी एक ही फ्रेज है by his matter. Of the orator तो होना है ज़ाहिर है, ये ऑब्जेक्ट है, बात किसकी कर रहे हैं. The third one, 2017. He not only comes there for swimming but also for coaching new swimmers. अच्छा जी, याद रखें ये अमीना ने बिल्कुल सही किया है बेटा. कम हेयर होता है, कम देर नहीं होता. गो देयर होता है, कम हियर होता है. पहले तो ये प्रॉब्लम फिक्स कर लें. शहजाद अब जो है मैं आपके जुमले की तरफ आऊंगा. He comes here not only for swimming but also coaching for new swimmers. So आपने जो है वर्ब का पहले इस्तेमाल कर लिया है ताकि आपको दोबारा से जो है ये रिपीट ना करना पड़े. He comes here not only for swimming. not only के बाद एक ही फ्रेज है for swimming but also for coaching. और but also के बाद भी सिमिलर वही कंस्ट्रक्शन यूज हो रही है. But also for coaching new swimmers. New swimmers ऑब्जेक्ट है, किनकी बात हो रही है. The last one is anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it. शहजाद शाबाश, वेल डन. देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहां बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव है
तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए। ही इज नॉट ओनली एंशियस, he is not only anxious to acquire knowledge but also eager to display it. But also eager to display it. So dear students, these were the correction of errors relevant to correlative conjunctions that we have discussed in this lecture. And you have also seen that the errors of the correlative conjunctions have appeared in the examinations many times, and its use is also and always there into Urdu into English translation. इसका use भी इसके साथ साथ ही होगा. So I will post this conjunction exercise just quickly doing it right now. इसको फौरी तौर पे हम कर लें. Sentence number 1. Give me something to drink or dash I will die of thirst. Now dear student, which conjunction do you prefer here? Or else. That is the correct one. Number 2, dash you are mistaken or I am. Again the problem of correlative conjunction. Either goes with or, neither nor. So either you are mistaken or I am. Number 3, he asked dash he might have something to eat. He asked if या whether. If की option नहीं दी तो whether लगाए, but be careful about the spelling. WHEEHER. He asked whether he might have something to eat. Number 4, dash you are called, you must come in at whence. When is the correct one? When you are called, you must come in at once. Number 6, ये 2009 में जिस तरह पूछा गया as it is. You will not succeed dash you work harder. Yes, you will not succeed unless you work harder. Number 7, perhaps the most important one. He fled, वो भाग गया था, dash he should be killed, कि कहीं वो मारा ना जाए. Left, dear student, हमेशा याद रखें left जो है इसके साथ हमेशा should आता है. Lest he shouldn't be killed, कहीं वो मारा ना जाए. Lest he should be killed. Number 5, we missed it. I cannot give you any money dash I have none. मैं आपको कोई पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं. Yes, correct. For I have none. Dear students, that preposition for sometimes acts like a conjunction. Because की sense में भी ये use होता है. So because is a subordinating conjunction. ये वहां पे use हुआ है. For I have none. इसी तरह preposition since भी because की sense
and 2018, but we have also discovered the relevant correction of errors of correlative conjunctions. इनके भी जो एरर्स है हमने साथ ही उनको भी डिस्कस कर लिया है. Moving towards the paper of 2017. Dear student, in 2017, the translation was bit metaphorical or idiomatic. इसके अंदर अगर आप देखें तो idioms का इस्तेमाल जरा ज्यादा हो रहा है. मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन जो है उसका ज्यादा रूम है. पहले ये मैं टेक्स्ट आपको पढ़ के सुना देता हूं. "2017 एग्जामिनेशन पेपर, अपने पोशीदा ऐबों को मालूम करने के लिए ये देखना जरूरी है कि हमारे दुश्मन हमको क्या कहते हैं. हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुवाफिक हमारी तारीफ करते हैं. अव्वल हमारे ऐब इनको ऐब ही नहीं लगते या फिर हमारी खातिर को ऐसा अजीज रखते हैं कि इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से इनको पाते हैं." अच्छा बेटा, ये दो पैराग्राफ नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे स्पेस आ गई है. ये पैराग्राफ एक ही है. "या फिर इनसे चश्म पोशी करते हैं, बरखिलाफ इसके हमारा दुश्मन हमको खूब टटोलता है और कोने कोने से ढूंढ कर हमारे ऐब निकालता है. वो दुश्मनी से छोटी बात को बड़ा बना देता है, मगर इसमें कुछ ना कुछ असलियत होती है. दोस्त, इसलिए हमें अपने दुश्मन का ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए कि वो हमें हमारे ऐबों से मुत्तला करता है. इस नाजुर में देखा जाए तो दुश्मन दोस्त से बेहतर साबित होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, so this is a longer paragraph as compared to the previous two जो अभी तक हमने किए थे. यहां पे मजीद आप देखें तो थोड़ा सा मेटाफोरिकल जो क्वेश्चन है उसका रूम भी अवेलेबल है. अपने पोशीदा ऐबों को मालूम करने के लिए, हाउ वुड यू ट्रांसलेट पोशीदा ऐब? व्हाट इज द वोकैबुलरी अवेलेबल इन योर बैंक? यस, हिडन फ्लॉस. In order to find our hidden flaws, this is how you will start. In order to find our hidden flaws, अपने पोशीदा ऐबों को जानने के लिए यह देखना जरूरी है कि हमारे दुश्मन हमको क्या कहते हैं. इन ऑर्डर टू फाइंड आवर हिडन फ्लॉज, क्या कहते हैं इससे मुराद है हमारे दुश्मनों की हमारे बारे में क्या राय है. एक्सक्यूज मी सर. जी जी. सर जैसा सर हमने पीछे भी किया है, तो क्या सर हम उसको सेंटेंस को ब्रेक करके जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे उसको सिंपल सेंटेंसेस में लिख सकते हैं या उसी को एज इट इज लिखना पड़ेगा? ये आप बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में लिख सकते हैं. मतलब सर एक इंफॉर्मेशन कोई मिस नहीं होनी चाहिए, ये याद रखें. तो कोशिश तो यही होती है कि उस अगर तो कंपाउंड सेंटेंस है तो आप भी कंपाउंड सेंटेंस में लिखिए. अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो आपको भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही होना चाहिए. कोशिश तो यही करें. इन केस इफ यू कैन नॉट डू इट, then at least write in the simple sentence, in the simple structure. So means आइडिया सेम है लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज भी हो जाए, मतलब सिंपल सेंटेंस की जगह कंपाउंड लिख रहे हैं, कंपाउंड की जगह कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, अगर बात एक ही है तो वो एक्सेप्टेबल है. हाँ, ये फिर हो सकता है एग्जामिनर हो सकता है थोड़े मार्क्स आपके लेस कर दे, मगर इतना ज्यादा वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि बिल्कुल ही पीछे पड़ जाए. वो क्रेडिट जरूर देता है कि आपने अटेम्प्ट किया.
ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम जी। अच्छा जी, अपने पोशीदा ऐबों को मालूम करने के लिए ये देखना जरूरी है कि हमारे दुश्मन हमको क्या कहते हैं। स्टूडेंट, दिस इज वन पॉसिबल वर्जन, और ये यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किया है, शहजाद ने भी, ये भी बिल्कुल ठीक है। शदाबा ने भी लिखा है परसेप्शन ऑफ एनिमीज अबाउट अस, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आवर हिडन वीकनेस, our hidden flaws, our hidden shortcomings, it is important to consider the perception of our enemies. It is necessary to consider the opinion of our enemy. ये सारे वर्जन एक्सेप्टेबल है सब। हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुवाफिक हमारी तारीफ करते हैं। देखिए, यहाँ दो एक्सट्रीम है, एक तरफ दोस्त है, एक तरफ दुश्मन है। हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुवाफिक हमारी तारीफ करते हैं। ऐसी तारीफ, माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, जो आपकी की जाती है और आपको अच्छी लगती है, हम ऐसी तारीफ को कहते क्या? यस, बटरिंग से करीब करीब वर्ड, एकेडमिक। Our friends usually flatter us. फ्लैटरस, हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुवाफिक, यानी कि जो हमारे दिल को बड़ी पसंद आती है, हमारी तारीफ करते हैं। ये फ्लैटरी क्यों है? जरा अगले जुमले पढ़िए, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जानबूझ के आपकी तारीफें कर रहे हैं। अव्वल हमारे ऐब इनको ऐब ही नहीं लगते, या फिर हमारी खातिर को ऐसा अजीज रखते हैं कि इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से इनको छुपाते हैं कि भाई हमारी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, या फिर इनसे चशमपोशी करते हैं, जानबूझ के नजरें फेर देते हैं। ये फ्लैटरी नहीं है तो फिर और क्या है? सो डियर स्टूडेंट, इन दिस सेंटेंस, जिस तरह हमने 2018 की ट्रांसलेशन की थी तसव्वुफ की मशहूर किताब कश्फुल माजूब के मुसन्निफ हज़रत अली हिजवेरी अल मशहूर हज़रत दाता गंजबख्श भी, मगर इस सेंटेंस में 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिनको डिपेंडेंट कैसे बनाया गया है? विद द हेल्प ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। यहां इस अव्वल के ट्रैप में ना आइएगा। इट इज बेसिकली द यूज ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन आइदर और। सो अव्वल हमारे ऐब इनको ऐब ही नहीं लगते। आइदर दे do not consider our flaws serious, either they do not take our flaws seriously, comma, or they do not want to hurt our feelings, या फिर वो हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अब यहां पे अगर आप इसकी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, बड़ी क्लमजी स्ट्रक्चर बनेगा। या फिर हमारी खातिर को ऐसा चीज रखते हैं कि इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से इनको छुपाते हैं। भाई कहना क्या चाह रहे हो? गो फॉर द मेटाफोरिकल वन, और दे डोंट वांट टू हर्ट आवर फीलिंग्स, या फिर इनसे चशमपोशी करते हैं, और जस्ट, अब यहां पे डियर स्टूडेंट आपके इडियम्स काम आएंगे। इग्नोर की जगह एक और इडियम है, नजर फेर लेना, और दे जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई, और दे जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई, जानबूझ के नजरअंदाज करना। इफ यू टाइप ऑन द इंटरनेट इडियम्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, तो इडियम्स निकल आएंगे। टर्न अ ब्लाइंड आई, नजरअंदाज कर देना। टर्न अ डेफ ईयर, सुनी अनसुनी कर देना। दीज आर ऑल द इडियम्स, और दे जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई। सो ये सेंटेंस एक है आइदर और से डिवाइड।